हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट टुडे। आज की ताज़ा खबर ये है कि चैट जीपीटी 4 रिलीज हुआ है अबाउट 15 आवर्स ago or so, and I have with me Gautam Jha to talk about uh, what chat GPT 4 is all about. So Gautam, over to you. चैट क्या है? जीपीटी 4 जो है ये ऑफ कोर्स अगर आप एक जैसे इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक, तो जिसने भी जीपीटी 3.5 नहीं सुना होगा वो तो फिर जीपीटी 4 क्या ही समझेगा। बट आई एम अज्यूमिंग कि लोगों को चैट जीपीटी जो कि जीपीटी 3.5 था टेक्निकली, उसका एक एवोल्यूशन है बेसिकली। बट वो एवोल्यूशन ऐसा है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था जीपीटी 3.5 कि आपसे वो कॉन्वर्सेशन कर सकता था इन अ टेक्स्ट। ये उसका नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन है कि आप उसको इनपुट दे सकते हैं किसी और फॉर्मेट में, जैसे कि आप उसको एक इमेज दे सकते हैं और उस इमेज के बेसिस पे वो आपके लिए फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बना देगा या कुछ और क्रिएटिव बना देगा एज एन आउटपुट। तो ये GPT-4 एक बस एक एवोल्यूशन है ऑब्वियसली। ये कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है और इसका एवोल्यूशन आता रहेगा हम्म। बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे बेस्ड है। जो जो लोग कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो इनको इसको समझ सकते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा के ऊपर वो ये ऐसे टूल्स बना रहे हैं। दोनों जीपीटी 3.5 और GPT-4 ये एवोल्यूशन उसी के बेसिस पे चल रहा है। आपको ऐसा लगा कि यू नो 3.5 की जगह दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी और वो उसको तब 4 कर देते और अब की बार 4.5 करते, तो उनकी वर्जनिंग थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट रहती? सवाल एक्चुअली ये नहीं है। जैसा कि तू जानता है कि भाई मुझे वर्जनिंग और चैट जीपीटी 3.5 और 4 इससे ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है हमारे लाइफ में। what is the हुँ, meaning, what is the implication of these technologies in our day to day life। ये हुँ, ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप्स पे देख रहा हूँ डिस्कशन डिस्कशन ऐसे हो रहे हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, उसकी उसके पास नौकरी रहेगी या नहीं, और इस टाइप हुँ, के सवाल पूछे जा रहे हैं रादर देन कि जीपीटी 4 में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ द थिंग्स जो हो सकता है। लेकिन हुँ, ज़्यादातर लोग इस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं अभी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की क्या ज़रूरत है या इस एम्प्लॉयमेंट की क्या ज़रूरत है। तो हुँ, इसीलिए हुँ। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है टू एनालाइज कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं जीपीटी 4 के बेसिकली। गौतम, तुम तो रिसर्चर हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एंड यू मीट ऑल दीज हाई फ्लायर्स जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, बट सम ऑफ देम आर आल्सो गुड एट काइंड ऑफ क्रिएटिंग द एयर के कुछ तो मैसिव इनोवेशन हो रहा है, और कुछ इनोवेशन के ऊपर भी इनोवेशन हो रहा है, सम हॉट gas as well. It just sells very well. Sometimes it's for real, sometimes it's just for clickbaiting. In this scenario, ये जो टॉपिक्स के बारे में आपने बात करी कि यू नो क्या डेवलपर्स की जरूरत होगी, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, what are your thoughts? I mean, as part of that fraternity जो कि चीजों को फेस वैल्यू पे ना लेके यू नो digs deep into it. What's your take? बिल्कुल, एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट को रिसर्चर है मेरे टॉपिक का, उसका रिसर्च ही चैटबॉट्स के ऊपर है। जब चैटबॉट्स एक फेनोमेना था तो उसने तब अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी, और इनफैक्ट उसने अपनी रिसर्च जीपीटी 3 के ऊपर जो उसने टूल्स बनाए थे, और अब वो ऑब्वियसली जीपीटी 3.5 के ऊपर बना रहा है और जीपीटी 4 के ऊपर बना रहा है। और मैंने उसके साथ एक्चुअली अभी रिसेंटली एक पेपर लिखा है ऑन कॉन्वर्सेशनल एआई एजेंट्स, जो आप हम उसको लिंक में वी विल पुट दैट पेपर्स लिंक। आई वुड recommend that Mhm. you read that paper to exactly answer this question basically, because I had the same discussion with him
बेसिकली वो एक जर्मन रिसर्चर है जो बहुत फोकस्ड है ऑन और बहुत इंटरेस्टेड है इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, और उसके बेसिस पे कैसे चैट जीपीटी या जीपी टी बेस्ड टूल्स में सेंटिमेंट डाल सकता है, क्योंकि वो सेंटिमेंट एनालिसिस पे अपना रिसर्च कर रहा है। लेकिन हुँ, मेरा रिसर्च बड़ा स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड है। तो हमने बेसिकली साथ में एक कोलैबोरेशन किया, जिसमें वी ब्रॉट इट टू द लेवल कि व्हाट शुड कंपनीज डू टू डिजाइन सच कॉन्वर्सेशनल एआई एजेंट्स, एंड हुँ, वी रोट दिस पेपर बिफोर द हाइप ऑफ जीपीटी 3.5 बेसिकली। और उस पेपर में GPT 3 के बारे में काफी कुछ है। बट हुँ, व्हेन आई री read the paper after all the hype of 3.5, and I felt that actually the strategy side of things and the management of such conversational AI agents, nothing has really changed. इट्स वो स्टिल द जो सेम। first principles, it's still the same. The first basic principles, that is it going to be usable for the consumer, is it going to provide value to the business, that has not changed. And that is why I think the paper is still relevant, basically, हुँ, क्योंकि हुँ, as a researcher you always think that is your research still relevant, and is can it make impact, a little bit more everlasting impact than just few weeks or months. And now to राइट। answer your question, basically, right, ki what are these academics thinking as well. Actually, academics are also very worried about GPT-3 based systems, especially jo log teaching mein hai, because as you know that a lot of students are trying to write their essays based on this, because it provides them shortcuts, information, etc. So there is a section who thinks that it is good as a tool to learn for students, that they can quickly learn things, but it is not so good as a tool to not put that original thinking in writing some of your essays, etc. और ये हुँ, हुँ, डिबेट अभी चल रहा है। GPT-4 आने से तो ये डिबेट और इंटेंसिफाई होगा as we move forward. So I am very very interested and curious ki what is actually going to happen. As a researcher, I myself am trying to think what exactly to do, how to use this and apply this in my own study, and we will of course keep discussing about this topic. एब्सोल्युटली। अ, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि अगर you look at ChatGPT 3.5 or ChatGPT 4, in ChatGPT 4, they have further reduced the effort on user to provide precise information because now you can scan an image, and based on that image, ChatGPT would try to interpret the question and will provide you the options and answers. यही चैट जीपीटी 3 में भी था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पे यू आर fiddling around with Google, putting the right keywords, etc. Not that it has been eliminated, but to a large extent now, rather than keywords, it's kind of looking at the broader context. So it still does not eliminate the need to validate the outputs. It still does not eliminate the need to know your subject to ask the right question. So it is still revolutionary in terms of execution, but I would still not say that the calculator or spreadsheet is gonna kill the accounting altogether. Yes, yes, and that is why if you see, and when we were having this discussion, right, and I told you that this is very very similar to the type of debate, like the debate that some of my friends are having कि जॉब रहेगा कि नहीं, क्या होगा फ्यूचर वगैरह। तो इसी Uh-huh. टाइप का डिबेट जब कंप्यूटर आया था इंडिया में, जब हम लोग व्हेन वी वर इन इंडिया, कि Mhm. कंप्यूटराइजेशन से सारे जॉब्स चले जाएंगे। Exactly. And there was a very well known politician from my state who had Mhm. said that ये कंप्यूटर वम्प्यूटर क्या है, ये नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारे सारे जॉब्स चले जाएंगे, जितने हमारे इतनी पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि अगर हमने कंप्यूटर लिया है तो मास स्केल पे जॉब्स जाएंगे। बिल्कुल। और वेरी सिमिलर कंसर्न्स अभी भी हैं, बट Mhm. ऐसा ऑब्वियसली नहीं हुआ। इनफैक्ट मास स्केल पे जॉब जनरेशन हुआ इन व्हेन कंप्यूटराइजेशन बेसिकली हुआ इन द पास्ट। सो आई डोंट थिंक दैट this is also one of those events which is not really going to tip the scale in terms of okay completely mass
unemployment, etc. It will actually generate even more employment, is my belief. And in मगर fact, again, लादन as तुमको every लग technology does, humans का life आसान करेगा. मगर do you think impact of chat GPT is going to be as huge as, let's say, computerization back in the day was? That is actually very, very um, good question. And it is obviously very, very difficult to answer. वो जो एक हमेशा एक ग्राफ दिखाते हैं हाइप साइकिल वाला, अभी वो अपने Mm-hmm. हाइप साइकिल में ऊपर है. हाइप साइकिल के बाद एक वो ट्रफ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट आता है हर चीज में. Of course. Mm-hmm. यू कैन से दैट द इंटरनेट एज में जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ था, दैट वाज द Mm-hmm. ट्रफ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट Mm-hmm. बेसिकली. बट इफ यू सी आफ्टर 10-15 years वापस एक्चुअली डॉट कॉम ही बने, उसका नाम डिजिटल दे दिया गया बट डॉट कॉम ही बनते गए. और वो Mm-hmm. वापस एक्चुअली अपने एक्चुअल नॉर्मल ग्रोथ एक्सेलरेशन पे आया. और Mm-hmm. वह वही सिमिलर चीज GPT-4 में भी होने वाला है कि Mm-hmm. अभी हाइप ज्यादा है, फिर एक डिसइल्यूजनमेंट आएगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होगा जब ये एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट होगा, क्योंकि बिकॉज अभी क्या होगा कि हर एप्लीकेशन इसको इंटीग्रेट करेगा, जो कि Mm-hmm. एक्चुअली ऑलरेडी कर रहा था. जब भी हर एप्लीकेशन अपने आप को बोलता था कि वी आर गोइंग टू, वी हैव एआई, इनबिल्ट एआई, in Mm-hmm. reality they were anyways trying to use some of these similar tools and techniques. But now they, instead of saying we have AI inbuilt, they will say we have GPT inbuilt. ये Mm-hmm. हाइप फिर से क्रिएट करेगा अगेन. Mm-hmm. और फिर थोड़ा सा डिसइल्यूजनमेंट आएगा जब उस लेवल का ट्रस्ट नहीं आएगा. बहुत इजी एग्जांपल, what you recently saw with Google, right? When Yeah. Google tried to introduce GPT, and how spectacularly एक दो यूज केस ही चलाया और उसमें वो फेल हो गया. तो Mm-hmm. वो एक डिसइल्यूजनमेंट था. Mm-hmm. जो अभी ऑब्वियसली उनकी कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट ने इनकैश कर रहे हैं. बट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू लास्ट दैट लॉन्ग टू बिगिन विथ. And then when people will think that this is over, the hype is over, then in reality it will take off without that level of hype Mm-hmm. around it, जब expectations कम हो जाएंगी, like it happens with every technology. But do you think this technology or this kind of answering capability of a computer or system is here to stay? uh, of course it is here to stay. It is in its nascency right now. Mm-hmm. It is only going to increase uh, more and more. uh, but again, it is still solving narrow use cases. In my head, these are all narrow use cases at this stage. Perhaps the other way of asking was, क्या हमने पहला ट्रांजिस्टर बना लिया towards making the computer? हाँ, वो तो again, I'm a mathematics student. Yeah. Mm-hmm. So all of the maths and statistics behind this has been there since the 70s and 80s, basically. And in Yeah. fact, even before that, when Alan Turing, did the Mm-hmm. research on neural networks, etc. The Yeah. problem was that the underlying hardware and technology was not ready. Now the Mm-hmm. underlying hardware and technology is ready, and that is why we are seeing its impact at scale. Mm-hmm. And if you move ahead, then a totally different level of revolution is coming our way, which is jiska quantum computing. You must have heard, if you Mm-hmm. if you've heard about quantum computing, that is going to fundamentally change this, because that is going to provide a test bed for Mm-hmm. these type of technologies to even accelerate further. So it is still in its nascency. Transistor हमने मतलब बना लिया है. आइडिया सारे हैं स्टार ट्रेक वाले, Mm-hmm. या स्टार वॉर्स, जो भी इस इन सब टाइप के फ्यूचरिस्टिक मूवीज के फैन हैं. तो all those ideas are there. It is just about now making it happen in, Making it happen. yeah. I think in very recent history, I would say this is the first time I'm hearing somebody saying now we need some really good hardware so that the applications can run. Because पिछले 2 decades से the rhetoric has been कि the hardware is there, the applications just don't perform. And
I think ये deep learning neural networks are clearly a domain जहाँ पे even with ये graphics card की technology में जो इतना ज़्यादा jump आया है पिछले I would say एक decade में, I think this is com, quantum computers are going to be even a much bigger deal. It's going to be like on steroids, isn't it? Yes, of course, because one thing jo we keep hearing that if we get better data we can provide better results, right? Hmm. But in reality, it is about if we can simulate better, we can provide better results. Because Hmm. all of these artificial intelligence technologies are predictive, they are Yeah. all probabilistic. So Hmm. you can have a better probability of the results if you can predict better. And to be able to predict better, you should be able to simulate and model better rather than just Hmm. have good data. Yes, of course, data is important, but you should be able to model better. And with quantum computing you will be able Hmm. to model better is my viewpoint. And that is why the probability or will be a bit better, and it will be a bit more the results जैसे आप देखते हैं जीपीटी के साथ लोग खेल रहे हैं, ये मैंने Hmm. डाला तो ये आ गया, वो डाला तो उसके मीम्स आ रहे हैं वगैरह, and they are very funny, but in future actually results better होते जाएंगे, uh, basically. And also the computational cost of chat GPT is humongous right now. Not many people might know about this, but it's economically not viable to kind of just run it like that forever. दैट इज ट्रू अबाउट ऑल, लाइक ब्लॉकचेन, ये सब क्रिप्टो करेंसी का भी जब आया था तो इनकी भी कंप्यूटेशन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स Hmm. वर टू हाई, द इनविजिबल पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट? वो जो डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, एंड एज यू कैन सी जब भी जीपीटी अभी भी इफ आई ओपन इट वो आ जाता है बिजी है सर्वर, और उसके जोक्स आ जाते हैं, वो अपने आप पे ही जोक भेज देता है, राइट? जो Hmm. उनकी स्क्रीन में आ जाता है, it is exactly because of this, because the scale they had never imagined that so much of the public will show interest Hmm. in using it. The real use cases that they are thinking of actually is not so much the public facing use cases. They are really thinking of the enterprise use cases where people in the enterprises can use this, and that is where we will see the evolution Real. of the business use cases. And in fact, I completely agree on that point, Gautam, के आने वाले दिनों में chat GPT will only or chat GPT like solutions will only throw out the need for better underlying hardware or underlying technology to process that much of data. एक एक एग्जांपल मैं I would like to share with everyone. एक एक supercomputer, like the best computer in the world available right now, it can't simulate a molecule which has got, let's say, more than 50 electrons, because electrons can be at multiple places at one time, right? तो जहां पर ऐसी सिचुएशन है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है, वहां पे हमारी ट्रेडिशनल कंप्यूटेशन काम कर ही नहीं सकती. एंड इस टाइप के सवाल जवाब कॉन्टेक्स्ट, in subme, I think you need that level of computational power. So is it fair to say that eventually, even with the best of intentions, with current technology, uh, this whole thing is going to leave us high and dry? Like I said right earlier about narrow use cases, all Hmm. of these technologies will be very, very good for narrow narrow intelligence or narrow use cases. There's a Hmm. book, actually very, very interesting book, which is called Life 3.0. Hmm. उन्होंने बड़े अच्छे से, मतलब आई लाइक दैट बुक इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव डिफाइंड ऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ we always try to give the extreme case of the artificial general intelligence, जहाँ की कंप्यूटर कंप्यूटर सबको सब चीज पता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति का कंप्यूटर होता है कंप्यूटर जी, वो कंप्यूटर जी है वो Right, right, right. तो वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जैसा हो गया. और Uh-huh.
वो दूसरे स्केल पे है नैरो इंटेलिजेंस। बेसिकली हुँ, नैरो मतलब कि वो आ जाता है ना कि गो को हरा दिया कंप्यूटर ने, गो के सबसे अच्छे प्लेयर को हरा दिया या हुँ, कैस्प्रोविच को हरा दिया कंप्यूटर ने। वो एक्चुअली हाँ, मुश्किल यूज़ केस है चेस प्लेयर को हराना डेफ़िनिटली, बट है नैरो यूज़ केस वो फिर भी। उसी हुँ, हुँ, कंप्यूटर को, उसी एल्गोरिदम को अगर आप देंगे कि कि मुझे एक नेक्स्ट एंटीबायोटिक निकाल के दे दो लेट्स से ड्रग के लिए, वो हुँ। नहीं कर पाएगा अनलेस आप उसको कंप्यूटर जी एंटीबायोटिक ढूँढ रहे हैं, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, अब कुछ हेल्प करो, राइट? तभी वो कर पाता है वो यूज़ केस भी सॉल्व। और कुछ कुछ हद तक काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट का और इस एरिया में people who understand the constraints right now, they also say that as long as you have the basic fork of the code के जो इन वेरी क्रूड लैंग्वेज जो दिमाग है चैट जीपीटी का, अगर वो लेके उसको लेट्स से फार्मा इंडस्ट्री की कहानी सुनाए, तो शायद वो फार्मा में इट विल बी रियली गुड एट इट। इफ यू गो इनटू कंस्ट्रक्शन और लॉ और फाइनेंस और एनी सच फील्ड, सो जैसा ह्यूमन बीइंग्स में होता है, नॉट वन पर्सन नोज एवरीथिंग, probably you can create silos of knowledge uh, within your industry or within your application as needed. Is this how you think in the short run this is how it's going to play? एब्सोल्युटली, तो ये इसीलिए वो जो मैंने एंटरप्राइज़ एप्लीकेशंस के यूज़ केस दिए थे, वो यही Hmm. है। क्योंकि अभी च जीपीटी 4 या जीपीटी 3 में publicly available information, almost publicly and maybe some more information use करके they have created that model basically, which is a huge subset of Hmm. data I would say। लेकिन जो एक बिजनेस है, लेट्स से एक फार्मा बिजनेस है जो अगला कैंसर का ड्रग ढूंढ रहा है, उनके पास जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो आईपी है, once they apply the same technology अपने आईपी वाले नॉलेज में, then they may be able to generate More again value. some of those narrow use cases for their industry, and that is where इनकी applicability बहुत high होने वाली है in future, Hmm. as long as that again जैसे I don't know if everybody understands explainable AI एक टॉपिक है एक्चुअली, यहाँ कैम्ब्रिज में भी बहुत रिसर्च हो रहा है उस चीज़ के ऊपर कि Hmm. कुछ आंसर तो ले आता है जीपीटी, बट वो कैसे आया आंसर। Hmm. आज भी जीपीटी 4 भी वो आंसर कहाँ से आया, क्या मुझे सारे साइटेड रेफरेंसेस आप दे सकते हैं जिससे आपने ये आंसर लाया है, फॉर एग्जांपल। वो इतना आसान नहीं है वो एक्सप्लेन करना कि ये आंसर कैसे आया, और उसके ऊपर भी Hmm. एक्चुअली काफ़ी रिसर्च चल रहा है। अम, क्योंकि इंडस्ट्री को ये चाहिए होगा बोलना कि ये ड्रग क्यों काम करेगा, ये इतने आसानी से लोग थोड़ी ना कोई वैक्सीन ले लेंगे या ड्रग यूज़ कर लेंगे अनलेस यू आर एबल टू एक्चुअली एक्सप्लेन the discovery process, all the clinical trials process वगैरह, to make that happen and make that successful. So technology is useful, but it has to evolve still even more. I think neural network forensics is going to be at least 100 times more complicated than actually getting output from neural networks. हाँ, क्योंकि एज ह्यूमन तो हम कह देते ये तो मेरे मेरे कॉमन सेंस से या मुझे दिमाग में ख्याल आ गया, लोग मान Hmm. लेते हैं। लेकिन अगर एक टेक्नोलॉजी बोल देगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसीलिए ड्रग चलेगा, आपको क्या लगता है कि लोग मानेंगे नहीं, इस नहीं, नहीं, बात को? बिल्कुल। I think it totally makes sense. So तो ऐसा ही। I would like to say thanks to you, Gautam, for giving us a time today on this one. Viewers, if you have got any questions, please put it in the chat, and in the next uh, podcast, we will try to pick it up and try to answer those questions. And thank you very much for dialing in. Thank you. Thank you.